So, what is up, guys? Hello, Aman Khan. Hello, Vinod. कैसे हो यार आप लोग? Finally यार, आज बंदे आ गए मेरे ख्याल से. आवाज़ वगैरह ठीक आ रही है यार, तो बता देना प्लीज़, कंफर्म कर देना. बाकी लॉन्च इवेंट स्टार्ट हो चुका है हमारा. And let's start the launch event. Big boss. Hello, big boss. कैसे हो? आवाज़ ठीक आ रही है यार, प्लीज़ बता देना यार, कंफर्म कर देना. Hello guys, Hello. welcome to yet another exciting launch of Vivo smartphone. As you know, we love to bring you amazing phones, and today we are launching Vivo Series T. As Vivo successfully completes 7 years in India, we would like to thank each and every one of you for your love and trust. Vivo is a brand that has been loved by इसकी मेरी youngsters, आवाज़ कम आ रही है and we भाई, take या pride फिर in delivering वीडियो की products आवाज़ that कम आ they रही है? love. Today, we take the game one notch up. India's young are smart and people of action. They want to be more, do more, and do fast. They are impatient. They hustle and they are about now. Impatience is the virtue. They find joy in being dynamic. Hello, They are Pankaj Singh. multidimensional. Hello. They have fun. They also aspire for an exciting future. They like latest tech. They also like latest style. For this restless and dynamic youth of India who seeks fun in the present and aspires for an exciting future, we promise a product that enables this multi-dimensional life with its turbo power. Announcing all new Vivo Series T. Welcome to the Turbo Life. Get set, Turbo. One, two, three, get set, turbo. Krishna Kumar, good, 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 good. Vivo Series T, T1 5G. Get set, turbo. Turbo. Vivo. So now we have a special guest to host our launch. Someone who is quite dashing, multi-talented, and a youth icon. None other than Varun Sood. How are you? Very good, Pankaj. Thank you for the warm welcome. I'm really excited to be part of the launch. When I was backstage, you mentioned about the Turbo Life, right? My question to you is, what can I expect from this phone? Varun Well, Sood, who is? picture के starting में spoiler दे दूं क्या? That's what the launch is for. We'll find out in due time. Well, I'm quite excited to see what we have in store. And I'm excited to see your reaction. The stage is all yours. Take it on. Thank you so much, हेलो Pankaj. सुखदेव भाई, क्या हालचाल? कैसे हो आप? Thank you again, Pankaj. But before getting into the phone right away, I would like to point out the fact that it's so difficult to find the right phone. I mean, इतने सारे options है market में, विनोद, इतने सारे phones okay है भाई, that अभी I ठीक है, personally okay, get okay, very okay. confused. Thank In you. today's time, Confirm people करने end के up लिए, thank you researching भाई. more about the right phone than the right life partner. I mean, because a phone will last you longer. But that's a different discussion Pricing altogether. देखना Also, बहुत there's ज़्यादा so much pressure on the amazing होगा. manufacturers क्योंकि because leaks we are वगैरह constantly कुछ doing निकल के something or सामने the आ गई थी, other वो on the तो phone. पता ही है भाई क्या कुछ Some देखने of को us are मिलने वाला है, shooting but reels for our social media. क्या Some of us pricing are रहने वाली capturing है, beautiful, वो stunning ज़्यादा outdoor interesting shots. चीज़ है. Some of us are watching online shows like we are binge watching it all the time. And a few of us are playing games on the phone. And अगर time बच गया, so we even use the phone to make phone calls. And to tell us about what all has been put together for Series T, we have with us Mr. Avnish Kumar, Product Manager, Vivo Series T, who will help us understand the phone a little better. Hi, buddy. How are you? Have a seat, have a seat. I have a lot of questions to ask. For sure. I'm here for that as well. So Avnish, the day is finally here. How are you feeling? To be honest, Varun, it's always exciting to be in a launch event. It is in many ways how an actor feels before a film release or a sports person before a big game. Our entire Vivo team has worked really hard to put this phone together, and now it's time to showcase it to the world and see their reactions for something that has been created by keeping them in mind. I can completely understand. It's like those butterflies you get in your stomach before an important exam, right? कि कुछ out of syllabus ना आ जाए. That Vivo को everything launch that event पहली I've बार studied cover is कर in रहे the हैं और थोड़ा portion फीका फीका सा लग and रहा है, पता नहीं क्यों. everything is just covered. In a Right? way, yes,
because as you mentioned मुझे लगता था earlier, Realme का there launch is event so थोड़ा much फीका होता है, fit in inside a single but phone, काफी and interesting होने our वाला है R&D Realme team, 9 hats off to them, has worked really और hard Vivo to bring T1 out के the बीच phone में। the way about to launch today. So, ladies and gentlemen, boys and girls, presenting to you for the first time ever the all new Vivo T1 5G. So Varun, check it out. Wow. The feel of it is really nice and Absolutely. it's very light, Yeah. very comfortable to hold. And I use a lot of phones in my life. This has to be one of the lightest phones ever. क्या लगता है guys क्या pricing पे होगा बताओ It doesn't even feel bulky in the pocket. Absolutely. You 17 call it the 18,000 turbo में हुआ appearance, तो right? बहुत बढ़िया होने वाला Yes, है indeed. Because even in the sleek body, we promise to deliver our consumers turbo speed with this turbo appearance. You know what? It actually feels like I'm holding nothing at all. It's just amazing how you guys have just put in everything in such a sleek phone. Yeah. Man, it doesn't feel bulky at all. It's just a great feeling. Yeah, Varun, I'll tell you. We challenged the norms this time. And at 8.25 mm, this Vivo T1 is slimmest 5G phone in this segment. Wow. And it weighs only just 187 grams. 187 grams. Can't even do a bicep curl with this. ये है कितने का? Varun, there are a lot of things to discuss about before we go to the pricing. But let me tell you more about phone apart from slimness. Okay, I like that use of the term. You don't say thickness anymore? See, Varun, what happens is terms like these help us to change the perspective you see. So, apart from slimness, T1 5G has 2.5D straight middle frame design, which reproduces the classic geometric aesthetics. Could you explain that in like normal terms? Because you know what, I'm a tech expert, guys. You know about it. Yeah. You are a tech expert. But people who are watching it right now might not understand the हाँ बिल्कुल expert सही भाई terminology that you're 20,000 using. के करीब Well, भी I आएगा also उससे understand it. You can tell them कम में in नहीं a देंगे simpler बट manner. होना maybe. चाहिए Sure, because Varun, LCD that's why display I'm है here. So, the lightness and the तो slimness भाई coupled with the frame design makes the body sleek. And as I mentioned earlier, अंकित कुमार we are 20 doing 25 20 so 25 बहुत much ज्यादा हो with the जाएगा भाई phone that it इस फोन makes के it लिए LCD easier to डिस्प्ले है play इसके games अंदर that you do Yeah, all the time. usually, All the time. right? ये याद Binge रखना watch shows that I also do, you may be doing as well. Everybody. Is it? But I अगर इस generally प्राइस में do. आता है तो एमोलेड इन And डिस्प्ले spend फिंगरप्रिंट time on our स्कैनर phones. ये जो सब चीजें मिलनी Sometimes चाहिए बट simple ये as चीजें मिसिंग है इसके scroll अंदर through the social ग्लास media पैड entire day. I agree with you on this one. The lighter, the better. Absolutely, Varun. Lighter अंशु phone प्री कह solves रहे a हैं lot of अंडर 17 problems. के अंडर I agree with 17 you. के नहीं आने वाला Now you should दोस्त put the phone बट on the अगर table. आ जाए तो बहुत बढ़िया प्राइसिंग होगी Phone in my बट इतना pocket, नहीं right? आएगा Didn't even मे भी realize शायद it's there फर्स्ट all सेल के this अंदर while. आपको 18,000 तक देखने को मिल जाए बट अंडर 17 के नहीं देखने को Okay, so Avnish, बट फर्स्ट सेल के now अंदर that we मेरे have a हिसाब little से मत idea लेना what's on बिकॉज the outside of the phone, Realme 9 Absolutely. I सीरीज would आ रही like है to know Realme 9 what's on the Pro inside काफी of this phone. तगड़ा होने वाला है Varun, this phone is a power packed smartphone. There are a lot of things inside. So you tell me what exactly you want from the बहुत तगड़ा smartphone. कंपैरिजन हो You सकता can है tell इस me फोन के about the बीच में एंड processor on Vivo this 9 one. Pro के बीच That's what I vaguely Realme understand. 9 Pro के All I बीच know में is that the processor is like the core strength. Mhm. The better the processor, the more you can do with the phone, right? You're bang on, Varun. And we have put our key focus on भाई यही तो enhancing phone's खासियत है इसकी performance. ऑनलाइन With Vivo सेंट्रिक फोन T1 है 5G, इसीलिए ये our फोन आपको भाई consumers will थोड़ा सस्ता होने experience वाला है turbo 20,000 के processor, अंडर ये as फोन we आने have वाला the Snapdragon 695 processor with 6nm chipset. An upgrade from the previous generation, this makes it the segment's fastest 5G phone with an AnTuTu score of 4 lakh plus, है रंजीत while कुमार our चलो closest ये भी देखिए competitor has a नहीं score आएगा of 25,000 just का 3 lakh 55,000 plus. 20,000 Oh, that's quite fast and that's quite an upgrade. Yeah, And even I believe that we 21 have तक जा to सकता है बट फर्स्ट improve सेल के with अंदर time and अंडर get 20 better के with time. मिलेगा I know, right? And what this upgrade does, it improves the CPU performance by 15%. 15%. Yeah.
आजकल कंपनीज 15% इंक्रीमेंट नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर 15% इम्प्रूवमेंट हो रहा है. That's very impressive. Not just that, the upgrade has also improved the GPU. The GPU is graphic processing बिल्कुल unit, अभिषेक right? भाई Bang on, Varun. I'm a tech मतलब expert. I've done my 2022 homework के अंदर properly. मैंने अपनी That's वीडियो के अंदर always एक a वीडियो के delight, अंदर यही Varun. बोला था और And एक you बंदा would बोलता be मेरे को कि वाटर even ड्रॉप more स्टाइल नॉच delighted जो है वो when I वीवो की tell you that खासियत है the मतलब GPU has वीवो वीवो का improved by ट्रेडमार्क है मैंने बोला massive भाई नहीं 30%. ये कॉस्ट कटिंग Okay, का Avnish, तरीका so है since I'm on क्योंकि the जो move all the कटिंग time वाली Yeah. डिस्प्ले and I होती है ना keep वो watching हमेशा things, महंगी पड़ती है will it improve my और viewing जब experience? एलसीडी में आप देते Absolutely, हो कट Varun. रोल तो थोड़ा सा Not just that, स्क्रीन this ब्लीडिंग will का इशू भी आने improve लगता है your gaming experience as well. And this performance is coupled with 4, 6, and 8 GB of RAM, which पिक्सल्स बहुत can कम be है वैसे extended up to 12 GB RAM. Wow, that's really quick. So you mean to say that I don't have to worry about my phone lagging when I switch between apps? Well, Varun, definitely not. You can बिल्कुल run up to अंकुर अग्रवाल 25 apps in the ये background प्राइस with this Wow. one, and the मतलब performance will stay the same. हाई You चांसेस है know, बहुत our ज्यादा इसी generation प्राइसेस पे लॉन्च loves doing multitasking, playing games, switching between college work, scrolling social media, talking with friends, and many more वनीता things. जी This देखते हैं phone lets you do it all seamlessly. You know, Avnish, this phone, quite a performer. Absolutely. But what's the memory like on this one? So it comes with 128 GB of internal memory and it could be expanded up to 1 TB. That's crazy. You've really packed so much in this slim phone, I must say, Avnish. Not just that, if you are into gaming, which if my sources are right, you are, your experience of gaming will be elevated. Okay, so apart from making great phones, are you also a part-time detective? No, Varun, not exactly. Unfortunately, I'm not as quite the multitasker like T1 here. That's what I was wondering. Everybody can't be a versatile person like सात me, आठ right? बैंड का स्पोर्ट होगा Okay, so now that we know what's on the inside of the phone, बाद what about the display? बाद में Okay, Varun, a very interesting question. Now tell me, what's the smoothest thing you can ever think of? Smoothest thing, silk. Oh, wonderful. अंशु So you have experienced Silk? आठ Yes, बैंड I के felt साथ it. तो चलो आप Now आठ बैंड का imagine स्पोर्ट मिल if your जाएगा viewing experience would be as smooth as Silk as well. Well, that'll be 20 something. के That'll be something amazing. Keeping that in mind, Varun, T1 5G has 120 Hz refresh rate. The turbo screen will help you really see poetry in motion. It will take your viewing experience to the next level. It'll be that smooth, like makhan jaisa ekdam. Absolutely. And keeping our consumers in mind who love gaming, this भाई feature गैस चल is रहे हैं tailor सबके made अच्छे as खासे it will मतलब पर prevent ठीक है lags यार and they can अभी तक enjoy सभी लोगों game ने seamlessly. ऑलमोस्ट Gaming की सही इतनी बात हो प्राइसिंग गई जज है, की तो सभी so एक्सपेक्टेड you're for a प्राइस game सही है then. सबका That's not a ऐसा नहीं problem, कोई कोई Varun. लोग बहुत ज्यादा एक बार कम ये launch एक्सपेक्ट कर finish रहे हो हैं जाए, then I wouldn't mind कुछ beating बहुत you ज्यादा एक्सपेक्ट करने because लग my जाते हैं phone has 240 Hz touch sampling rate. Wow. Also 120 Hz refresh rate and 240 Hz touch sampling rate in this segment, which allows the user to have better control of the game and provides high frame dynamic picture. बताएंगे भाई बताएंगे Okay, so पूरा शोकेस तो that's करेंगे अपने clearly प्रोडक्ट को cheating because you'll बेसिकली have an हमें upper बेशक hand. पता है You have this phone. लीक्स के So जरिए for it to be a बट fair fight, you should both use the same phone, right? I can use this phone, you can get some other phone. That's completely noted and I will still beat you. Okay, things are हेलो getting मिस heated रानी out here. 94 हेलो Although we हेलो can't quite cool that down, but T1 5G comes with turbo 5-layer liquid cooling technology. Okay, so does that mean if I'm constantly viewing things on my phone Mhm. and it gets heated up, Realme it'll 9 cool Pro down Plus का automatically प्राइस by थोड़ा itself? ज़्यादा हो सकता है In a भाई way, वो yes. 22 What this technology does is it Realme uses 9 Pro 5-level आपको इस रेंज में cooling देखने को मिल technology जाएगा 17 coupled 18 with हज़ार the के बीच turbo में cooling intelligent इवन thermal Infinix का management फोन system भाई makes the क्या core temperature जबरदस्त फोन आने drops वाला है by Infinix 10 05G degrees Celsius. Wow, that's अल्टीमेट actually a game changer. I wish in humans also we had a technology like this Yeah. where people are getting into a fight, they're getting heated up, and this technology comes into them, and then boom, world peace. Well, Varun, I'll definitely check with my team about that if they can develop something around it. But until then, we will have to do with just this for now. And in meanwhile, enjoy सुखदेव playing भाई games and watching ऑफर videos बताएंगे अभी on your जब phone प्राइस without worrying बताएंगे about तब ऑफर भी heating बता it देंगे up. ये कि This क्या solves a फर्स्ट bunch of ऑफर problems. फर्स्ट सेल पे But मिल have you सकता है noticed ऊपर people are now ये constantly एक on the wire ऑनलाइन right now? सेंट्रिक फोन है They're ऑफलाइन constantly वाला नहीं connected. है Even when I'm traveling, तो if ऑफर I've entered डेफिनेटली a hotel मिलेगा इस room, पे my फ्लिपकार्ट friends look एक्सक्लूसिव for है the ये socket फोन to charge their phones because phone की battery इतनी जल्दी drain होती है. Well, Varun, don't worry at all. We got you covered.
With T1 5G, you won't Yes, feel like your बिल्कुल phone सही। is 22-23,000 constantly के पास on मिलने life वाला है 9 support. Pro Plus आपको। It comes with a massive 5000 mAh battery, which means you have a standby of up to 21 days. You can listen to music for up to 4 days straight, binge watch for up to 19 यार hours, उतना and एक्साइटिंग सा बना non-stop ही नहीं gaming for रखा up इन्होंने to लॉन्च इवेंट 8 मतलब मुझे hours. लगा था ज्यादा That एक्साइटिंग is देखने really को मिलेगा impressive. Yeah. My थोड़ा plan is to give one और phone अच्छे से to all रिप्रेजेंट my करना close चाहिए। friends. So Yeah. next time they complain about plug point nahi hai, phone की battery drain हो गई, I know what to do with them. Well, Varun, that's a great अंश choice. Ask बिल्कुल them to click Infinix Zero photos 5G and upload. बहुत This will बढ़िया help आने us वाला to है। spread the word too. Of सुपर course, I will. सैफ ने जो है वो उसकी Talking अनबॉक्सिंग about कर दी है clicking photos. Mhm. और What's the बहुत camera on अल्टीमेट this one like? फोन है Because होने वाला है वो this is बहुत one ही feature ज्यादा। that everybody craves for. Even when they're outdoors, they're shooting something, they want the perfect camera to upload like great videos, great photos. A good phone without a great camera is like pizza without cheese. Well, Varun, that's a great question indeed. We at Vivo pride ourselves in providing our consumers with phone टेक्नो ने भी cameras अच्छा काम किया that इस बार। help them टेक्नो का मुझे capture नहीं their पता सॉरी भाई important moments मैंने in life. टेक्नो को And फॉलो नहीं then किया। the T1 5G has a 50 megapixel high definition main camera with a new photosensitive element to capture more details. You know, Amnish, sometimes finding the perfect light is such a task. Right? I mean, you're in the moment, you're about to take that photo. You're figuring out the perfect light. Jab tak you figure out the perfect light, the moment is gone. I'm sure people can relate to this. Absolutely, Varun. And मेरे this हिसाब is one से of the एमुलेट biggest आना चाहिए problem that देखो consumer facing, low light बट भैया photography. अभी Well, माइक्रोमैक्स Varun, ने we एमुलेट try दिया था to बट solve वो that problem लोग with इशू बोल T1 रहे हैं कि 5G. एमुलेट के अंदर इतना As अच्छा be एमुलेट it नहीं है bright or low तो light बेकार environment, एमुलेट से अच्छा है this कि phone is equipped हमें to bring अच्छा you एलसीडी डिस्प्ले मिल ultra जाए clear image through excellent image processing, क्वालिटी बेकार नहीं providing होनी the चाहिए देखो turbo camera experience. So you mean to say, I could be on a beach, or I could be out camping. I will get my perfect photos. Absolutely. And this comes with super night mode to solve your low light photography Wow. and a bouquet mode which can help you for ऑब्वियसली professional Z5 तो ज़्यादा photography. बेटर है ही Moreover, it has rear mounted human eye tracking focus which will be really beneficial for someone like you who is a fitness freak. Because even when you are working out or out there playing basketball, the lens would focus on the eyes and will give you a clear image. This feature is probably the clincher for me. So the next time I'm playing basketball, I'll be using my Vivo T1 5G to record my trick shots. बिल्कुल Oh, अंकुर भाई Varun, that's a great idea 100% indeed. एग्री विद यू I'm really looking forward for it. Surprise us with your trick shots. Well, I sure will. But I have a surprise in store for you क्योंकि today as बुरे well. कलर्स नहीं होने चाहिए Oh, एट द एंड really? ऑफ द What डे is हमने it? So कलर्स we देखने actually हैं have हमें a नहीं bunch of कुछ students एमुलेट से who are लेना हमें नहीं smartphone एलसीडी से enthusiasts लेना Oh, who will अगर be हमें अच्छे asking you कलर्स questions देखने को मिल रहे हैं about this व्यूइंग phone. एक्सपीरियंस Are हमारा you ready अच्छा to be in है the firing lane? विजिबिलिटी oh, अच्छी bring है it धूप on. के No अंदर problem, Varun. Oh तो wow, कोई I like इशू the नहीं होता confidence. भाई Can we have the first बैटरी student का now, हल्का सा please? इशू जरूर होता All है right, so लेकिन first अच्छा up we अगर have एलसीडी Yash मिल from जाए तो Chandigarh. Okay. Thank you, Vivo, for giving me this कोई opportunity. बुरी बात नहीं है I'm facing a problem with my phone while gaming. It takes time to respawn. This is one problem even I face. When you die in the game, Mhm. respawn होने में यस इतना time लगता 20k है, के अराउंड हो and सकता है sometimes you मिस्टर can't even locate the enemy. And even if you can locate him, Mm. you can't fire at him on time. Mhm. That's one thing even I face. Okay. Yeah, exactly my point. And moreover, it gives an unfair advantage to my opponent. Can we expect Vivo T1 5G to help us out in this? Hi, Yash. As I mentioned earlier about the turbo performance of T1 5G, it has 120 Hz high refresh rate and 240 Hz touch sampling rate, which will immensely help you while gaming and you will respawn quicker. Also, with the 5-layer liquid cooling technology, you can play without worrying that your phone will heat up. So, go get your opponents with the Vivo T1 5G, and that's why we call it a turbo performer. Thank you. Nothing can stop me now. The next student joining us is Mohini from Lucknow. Okay. So thank you Vivo, for giving me this opportunity and I'm super excited. ये क्या कर रहे So हैं I ये तो have a लंबा खींचने problem वाली with बात होगी phones भाई that फालतू में sometimes it feels bulky and heavier and doesn't fit my pocket. So do you have a solution for this? You know, that's one problem even I face. Maybe not heavy on my wrist because I work out so much, but sometimes I'm on the bed, Right. I'm scrolling through my phone, Mhm. and the phone drops on my face. Oh my I can't even tell you how much it hurts. That's a big problem indeed, Varun. Hi, Moini. See, that's why we have designed slimmest 5G smartphone in वो the तो भाई segment टेस्ट आउट with करके ही पता लगेगा turbo appearance. क्योंकि जो Easy बड़े-बड़े on your यूट्यूबर्स wrist रखते and हैं it वो will fit in your pockets too. इतने अच्छे सर्कमस्टांसेस में रख के टेस्ट करते हैं कि जो नॉर्मल लाइफ में नहीं होते
Okay, फुल ऑन एसी almost time for a game. But before that, we have a last student. His name is Sagar from Pune. परफॉर्मेंस मोड Sure, ऑन no कर देते हैं problem. जो कि हम यूजुअली नहीं करते Hi हैं। everyone. My concern is the camera. नॉर्मल I want कंडीशन the में वो perfect बिल्कुल click, भी especially when I'm क्रॉस्ड traveling. आउट नहीं करते Also चीजें। taking picture when I party at night. Can you help me with this? Hi Sagar, understood your problem completely. We have a 50 megapixel triple rear camera which has features such as super night mode which will help you capture the perfect picture even in low light. This is why we call it a turbo camera. Avnish, that was fantastic. You spoke about turbo performance, Yeah. हाँ, अब तो बिना turbo बात के appearance, करने वाली right. बात हो turbo गई है camera. तो I'll go बार back to my बार वही first बातें question now. रिपीट करनी। Mhm. What's the price ऐसा on नहीं this मैं one? बोलूंगा Like? कि आप Because in today's वेट generation, करो, Mhm. people want a lot रियलमी more, का but वेट price करो they आप, don't want रियलमी lot more. 9 They want सीरीज कि थोड़ा कल सस्ते लॉन्च में होने पड़े। वाली है वो Right. अभी। So Varun, I'm तो from the कल product तक वेट team कर लो आप। and price is Pankaj's expertise. All right then. Well then, without waiting any longer, let's have Pankaj Gandhi back on the stage again. Hey ओके Avnish, सो how are you? फाइनली आ I'm गया। doing good, Pankaj. So are you ready for the price release? Yes, of course. But first, let's take a guess. Varun, a guess, please. Well, if I had to Okay, take a guess, तो I अभी would सही say से आ रहा है somewhere around आवाज मेरा सोनू भाई? 25,000. Looking at how sleek the phone is and the रुपेश, functionality is रुपेश, just sorry. brilliant. रुपेश This phone भाई is a अभी complete all-rounder. अच्छे से The साउंड आ रहा है all-new बता देना Vivo प्लीज। T1 5G, अभी मैंने माइक segment's निकाला पहले मैंने fastest माइक लगाया and the हुआ था। slimmest 5G smartphone, will be available in three variants. The 4GB 128GB will be priced at rupees 15,990. ओह The 6GB 128GB will be priced at rupees 16,990. And the 8GB भाई 128GB will be साहब priced at rupees 19,990. दिस To make it इज more exciting, इंटरेस्टिंग। we have a limited period introductory offer. You can avail no cost EMI up to 6 months and also get an 1000 additional रुपीस का आपको discount फ्लैट of rupees डिस्काउंट मिल जाएगा 1000 using HDFC के ऊपर। HDFC bank cards. With bank offer, the effective introductory prices are 4GB भाई आ गया सोनू 128GB भाई at rupees 16K में 14,990, 6GB 6GB 128GB वाला 128GB at बेस्ट rupees 15,990, and बेस्ट प्राइस 8GB 128GB at rupees 6GB 128GB 18,990. सुपर ओपी। इस बार किल कर दिया वीवो ने Vivo T1 5G will be available from एक्सपेक्टेड नहीं था 14th यार Feb भाई 12 noon गजब। onwards on flipkart.com, चलो भाई shop.vivo.com, वैलेंटाइन and डे हो stores गया अब near तो you. Wow, you know, 14 फेब को पूरा। after hearing the prices, I'm planning on giving a phone to all my close friends. But now since we are friends, Yeah. can I have that phone? Oh, this one? Absolutely, it's all yours. Thank you so much. All right, with that, we come to the end of the launch of Really Vivo यार T1 वीवो 5G. ने Thank गजब you, कर दिया Avnish, भाई Pankaj, साहब। and the entire team of Vivo for giving us your time and explaining us in detail about the phone. It was an amazing क्या experience to learn बात है about this यार। phone inside out. रिव्यू देखना चाहते हो Thank you बताओ। everybody for joining us. अगर रिव्यू This is देखना me, चाहते Varun हो तो Sood, डेफिनेटली आई signing off. बाइट एंड रिव्यू आपको देखने को मिल जाएगा चैनल के ऊपर। हाँ भाई बहुत अमेजिंग। मतलब क्या कहें यार अब कुछ नहीं कह सकते आप। इस प्राइस रेंज के अंदर एलसीडी डिस्प्ले दे रहे हैं, जो भी फीचर्स मिल रहे हैं वो अच्छी हैं, बस अब कैमरा परफॉर्मेंस वगैरह जो है वो बढ़िया होगा, कोई कंप्लेंट नहीं। एग्जैक्टली सब कुछ बढ़िया रहा तो कोई दिक्कत नहीं भाई। ओनली एमुलेट होना था। देखो भाई वही बात हो जाती है फिर, बेकार एमुलेट से अच्छा है कि अच्छा एलसीडी मिल जाए। अच्छा एलसीडी अगर मिल गया ना तो बहुत बढ़िया। मेरे हिसाब से वीवो के डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी होती है भाई। बाकी अगर टेस्ट करके आप लोगों को चाहिए टेस्टिंग तो बताना, रिव्यू देखने को मिल जाएगा, बट ओनली अगर आप लोग बोलोगे तो। Vivo T1 5G. वरना कोई Get फायदा नहीं है set यार। turbo. बाकी ये इसके फीचर वैसे अभी चेकआउट कर सकते हो आप लोग।
सिद्धार्थ सिन्हा, प्राइस भाई इसका निकल के आ चुका है। 4 GB वाला जो वेरिएंट है वो काफ़ी धांसू प्राइस में आया है, 16,000 एंड 6 GB रैम वाला 17,000 एंड आपको कुछ ऑफर वगैरह मिल के 15,000 के अंदर जो है फर्स्ट सेल के अंदर आप इसको बाय कर सकते हो। 6 GB 128 GB का, जो कि सबसे बेहतरीन वेरिएंट है मेरे हिसाब से, तो काफ़ी ज़्यादा सही है एंड ऑडियंस को भी पसंद आ रहा है यार। हाँ, वीवो की डिस्प्ले एंड कैमरा दोनों ठीक-ठाक होते हैं। हाँ भाई, मतलब ठीक-ठाक होते हैं, अच्छे कैमरास दे देते हैं वो, थोड़ा व्हाइटनेस ज़रूर लेके आते हैं फेस के ऊपर, बट ओवरऑल क्वालिटी अच्छा होता है, मतलब कुछ बुरा ऐसा देखने को नहीं मिलता एंड डिस्प्ले भी ठीक ही होती है, डिस्प्ले बुरी नहीं होती भाई। वीवो के फ़ोन मेरे फैमिली मेंबर्स यूज़ कर रहे हैं एंड अभी तक यूज़ कर रहे हैं। निखिल भाई क्यों, मतलब बकवास क्यों लगा आपको? मैं जानना चाहता हूँ। आप अच्छा प्राइसिंग पे लॉन्च किया है यार। सिर्फ़ एक ही चीज़ है जो आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को नहीं मिलती। 2 चीज़ें हैं एक्चुअली। एक तो ग्लास बैक नहीं देखने को मिलती, वो पर्सनल प्रेफ़रेंस है लोगों की कि कुछ को ग्लास बैक पसंद आती है, कुछ को नहीं आती। एक एमोलेड डिस्प्ले नहीं है। बाकी ठीक है यार, इस प्राइस रेंज के अंदर प्रोसेसर भी अच्छा देखने को मिल रहा है। 778G 778G इस प्राइस के अंदर देखने को नहीं मिलने वाला है। रहने दो, हाँ जी। इस प्राइस रेंज के अंदर नहीं देखने को मिलेगा, वो थोड़ा आपको हायर प्राइस रेंज, उसकी प्राइस रेंज 25,000 रुपए तक देखने को मिल जाएगी। स्नैपड्रैगन 778 है कि नहीं सर, इसके अंदर आपको जो है वो स्नैपड्रैगन 695G देखने को मिलता है, जो कि 6 नैनोमीटर के ऊपर ही बेस्ड है। स्नैपड्रैगन 778G जो है वो भी 6 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है, तो बैटरी दोनों की अच्छी देखने को मिलेगी, लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो आपको 778 की बेटर मिलती है। भाई मुझे फ़ोन ज़बरदस्त लगा, देखो मेरे हिसाब से गुड टू गो है, आप लोग ले सकते हो। बाकी नो ब्रो, 12 GB रैम का ऑप्शन नहीं है, 8 GB तक आपको हाईएस्ट रैम देखने को मिलेगी। यस ब्रो, डिस्प्ले एलसीडी पैनल है यहाँ पे। हेलो विपिन ब्रो, क्या हाल चाल? ਵਧੀਆ ਕਿਵੇਂ? ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ सर जी, किद्दां? हेलो हेलो, की हाल चाल? डिस्प्ले अच्छा नहीं है, एमोलेड देना था। देखो भाई वो तो बिल्कुल ऑब्वियसली एमोलेड का मुकाबला एलसीडी तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर माइक्रोमैक्स जैसा एमोलेड दे देता तो उससे तो बेटर एलसीडी है यार। क्योंकि बेकार एमोलेड अगर दे दे तो कोई चीप क्वालिटी के एमोलेड लेके क्या करोगे? सस्ते प्राइस रेंज के अंदर आपको सब कुछ नहीं मिल सकता ना मेरे दोस्त। दिल तो मांगता ही रहता है कि कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। 5,000 का मोबाइल है, 64 GB। 64 GB कहाँ, मतलब 64 तो है ही नहीं। 8 GB 128 GB सर आपको 20,000 के अराउंड पड़ जाएगा, लेकिन ऑफर वगैरह के अंदर भैया आप 18,000 19,000 के साथ आप इसको बाय कर सकते हो। अगर आपके पास एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड वगैरह है तो आप बाय कर सकते हो। फोन की स्क्रीन था, फोन देखो इस प्राइस रेंज में जो है वो Realme 9 Pro आने वाला है, वो भी एलसीडी स्क्रीन के साथ ही आएगा, या फिर इन्फिनिक्स का जो है वो 05G आ रहा है, वो भी एलसीडी डिस्प्ले के साथ आ रहा है। इस प्राइस रेंज में एलसीडी ही मिलेगा। देखो अब अगर आप माइक्रोमैक्स ने एमोलेड के साथ फोन दे दिया, या फिर आपको एक आधा फोन पोको वगैरह का देखने को मिल जाता है, एमआई वगैरह का कम प्राइस के अंदर है एमोलेड डिस्प्ले, तो उसका मतलब ये नहीं कि हर कंपनी दे देगी भाई। अभी मार्केट में उतना एमोलेड सस्ता नहीं हुआ, एमुलेट का प्राइस स्टिल हाई है अगर आप एक हाई क्वालिटी एमुलेट यूज करते हो तो। प्रसाद भाई, 6 GB रैम एंड 128 GB मेमोरी वाला अगर आप बाय करते हो तो फर्स्ट ऑफर के अंदर आपको 16,000 रुपए का ये फोन पड़ जाएगा, 15,900 कुछ का, मतलब 16,000 लेके चलो आप। स्पीकर डबल है या सिंगल? स्पीकर सिंगल देखने को मिलेगा, सिंगल मोनो स्पीकर है इसके अंदर, डुअल स्पीकर नहीं है। हाँ, ये भी एक अच्छा पॉइंट आपने नोटिस किया कि डुअल स्पीकर नहीं है, ये एक कमी है। इन्फिनिक्स एमुलेट के साथ नहीं आएगा, नहीं ब्रो, इन्फिनिक्स एमुलेट के साथ नहीं आ रहा, वो एलसीडी डिस्प्ले के साथ आ रहा है, कंफर्म है ये। व्हाट इज योर ओवरऑल रिव्यू? ओवरऑल मुझे फोन अच्छा लगा। हर फोन के अंदर कुछ ना कुछ कमियां जरूर होती हैं, कोई भी फोन परफेक्ट नहीं होता भाई रमन भाई।
हर वीडियो में बोलता हूँ मैं ये चीज़। तो कुछ में जान के कंपनियाँ रखती हैं, कुछ में रह जाता है प्राइसिंग की वजह से। तो हर फ़ोन आपको परफेक्ट तो नहीं देखने को मिलेगा, तो ये भी परफेक्ट नहीं है, बट अच्छा फ़ोन है। चलो एक पोल डालते हैं हम यूट्यूब के ऊपर। मैं एक पोल डाल रहा हूँ, तो आप लोग मुझे बताना कि आपका क्या व्यू है, मतलब ठीक है? चैनल के ऊपर जाते हैं हम, अपना एक पोल डालते हैं वहाँ पे, एंड फिर आप लोग बताना कि आपको कैसा लगा, ठीक है? देखते हैं कितने लोगों को अच्छा लगा, कितने लोगों को बेकार लगा। लेट्स सी। मेरे हिसाब से फ़ोन अच्छा है यार, मुझे बढ़िया लगा फ़ोन। 8128 20,000 रुपीज़ का पड़ेगा आपको। 5G 7-8 बैंड आपको देखने को मिल जाएँगे सलीम भाई। हाँ, ये शिवम भाई ने जो ऑफ़र बताया ये बिल्कुल सही है। आपको जो 6 जीबी रैम 128 जीबी वाला वेरिएंट है वो 15,990 रुपए में देखने को मिल सकता है। तनवीर आलम 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, उस दिन बाय कर सकते हो आप इसको। पोल डालते हैं अभी हम एक, एंड देखते हैं कि बढ़िया कौन सी कंपनी है। हाँ, वीवो है भाई, क्या बात कर दी। $20,000 के अंदर वीवो का सही फ़ोन भाई, T1 5G अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, इससे बेटर नहीं है। अच्छा, वो भी लॉन्च हो रहा है क्या भाई? Redmi Note 11 का लॉन्च इवेंट मैं देखता हूँ ब्रो, अभी देखता हूँ। अगर वो लॉन्च इवेंट चल रहा हो तो हम अभी शिफ्ट कर देंगे उस लॉन्च इवेंट के ऊपर, फिर तो कंपैरिजन ही बन जाएगा। बाकी वीडियोस आ गई हैं, हम देख लेते हैं एक बार सब्सक्रिप्शन में। नेट थोड़ा स्लो रखा है, लेट्स सी। तनवीर भाई मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि ये आपको 14 फेब को देखने को मिल जाएगा। ओके, रेडमी भी लॉन्च कर रहा है भाई। रेडमी इंडिया का भी लॉन्च इवेंट चालू है बॉस। क्या कह रहे हो? Redmi Note 11s एंड Redmi Note 11 दोनों फ़ोन का स्मार्टफ़ोन का जो है वो Introductory चल रहा launch है। price of rupees 13,499. The 6 GB plus 64 GB variant will be available at an introductory launch price of rupees 14,499. ओके, प्राइसिंग तो इनकी भी ठीक लग And the रही है, 6 GB plus 128 GB बट variant will be स्पेसिफिकेशन नहीं available पता for अभी। rupees 15,999. Now moving on to the sleek भाई and रियलमी stylish का अभी Redmi प्राइस Smart नहीं Band आया ना Pro सामने, तो Sports Watch, always on fitness, with the big AMOLED color display, 110 plus pro workout modes, अभी कुछ नहीं कह सकते। SpO2 monitoring, IQ health इसको बंद करते algorithm. हैं यार अभी। The Redmi ठीक है, Smart इसका Band अभी Pro will फीचर्स be वगैरह नहीं available for पता आप उनको। तो वैसे भी T1 अच्छा फ़ोन लॉन्च हुआ है। मेन जो अभी तगड़ा कंपटीशन होने वाला है वो होगा मेरे हिसाब से रियलमी और वीवो के बीच में। देखते हैं कौन बाजी मारता है। हाँ, लेकिन पोको M4 में अभी थोड़ा टाइम लगेगा ब्रो, अंकुर ब्रो। पोको M4 जो प्रो है वो अभी थोड़ा कुछ दिन बाद आएगा, अभी नहीं आने वाला। तो इसीलिए रियलमी थोड़ा बाजी मार जाएगा। हाँ, अगर जब लॉन्च हो गया तो उसके बाद फिर कंपटीशन तो ऑब्वियसली बनेगा ही दोनों के बीच में। वीवो T1 प्राइस, भाई वीवो T1 का प्राइस अभी एक भाई ने शेयर किया था हमारे शिवम भाई ने, तो
6 GB रैम सबसे बेस्ट वेरिएंट जो है वो 6128 GB 15,990 रुपये फर्स्ट सेल के ऑफर के अंदर, अगर आपके पास HDFC का कार्ड है। सेम प्राइस है Redmi Note 11 एंड Note 10 6 GB वेरिएंट। हाँ भाई, अब इंटरेस्ट नहीं बन रहा यार, पता नहीं क्यों यार। नोट सीरीज के अंदर जो इन्होंने Xiaomi 11i सीरीज निकाल दी ना, जो ग्लोबल में Note 11 सीरीज थी उसी को मतलब एज अ नोट सीरीज लेके आते हैं इंडिया में तो बढ़िया रहता, लेकिन अब इन्होंने पता नहीं क्या कर रहे हैं यार, कंपनी वाले खिचड़ी पका रहे हैं यार, सबके सब लगे हुए हैं। मतलब मजा नहीं आ रहा यार, क्या कर रहे हैं लोग इतना। पोको M4 15 फेब को लॉन्च हो रहा है। ओ ओके 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 ओके, फिर तो पास ही है भाई। इस महीने बहुत सारे लॉन्च होने वाले हैं। ट्रैकिंग टेक ने पहले ही बोल दिया था कि इतना काम है, हम रातों को भी नहीं सोने वाले, ऑब्वियसली। इस महीने बहुत फोन लॉन्चेस हैं, बहुत। दूसरा कलर नहीं है क्या? दूसरा कलर, कलर कौन सा चाहिए? कलर चेंज क्या कहना चाहते हो, मतलब समझा नहीं मैं। रेडमी से अच्छा है रियलमी, क्योंकि उसमें चेंजेस रहते हैं। रेडमी में कुछ चेंज ही नहीं रह रहा, बस सीरीज लॉन्च कर रहे हैं सब। हाँ ये तो है ही है देखो, बट अच्छा लगा। अभी मैं जिस वीडियो को आप देख रहे हो, मतलब ये फुटेज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 11i से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा है फोन। मतलब MIUI 12.5 अभी काफी बेटर हो गया है। इसके अंदर मुझे एड्स वगैरह जो हैं या ब्लोटवेयर जो है वो मतलब बहुत कम देखने को मिला। आप काफ़ी सारी ऐप्स को अनइंस्टॉल कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है उसके बाद। तो अब भी MIUI भी सुधर रहा है ऑब्वियसली, अगर नहीं सुधरेगा तो पता ही है उनको, फिर बाकी ब्रांड आ चुके हैं भाई, कंपटीशन दे रहे हैं अच्छा, सभी को अपनी सेल करनी है। Redmi Note 11s की प्राइस, Redmi Note 11s का लॉन्च इवेंट चल रहा था भाई, वो मैंने नहीं देखा, मतलब वो मैंने क्लोज कर दिया टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज अभी Vivo T1 के ऊपर ही ये हमारी स्ट्रीम रहने वाली है, तो मैं शिफ्ट नहीं करना चाह रहा स्ट्रीम को। अच्छा लोग मतलब रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इंटरेस्ट है लोगों का। What do you think will Vivo be able to complete to Realme, Redmi and Oppo? देखो ऐसे ही फोन लॉन्च करने पड़ेंगे रमन भाई। जैसे आज फोन लॉन्च किया T1 5G, इसके अंदर ऑब्वियसली कुछ कमियां हैं। थोड़ा प्रीमियम साइड पे Vivo को और जाना पड़ेगा, थोड़ा और ऑनलाइन को टारगेट करे तो अच्छा है। जैसे कि आप देख सकते हो प्रेजेंटेशन से ही आप देख सकते हो कि Vivo अभी ऑनलाइन की मार्केट में नया है। हालांकि Vivo कितना पुराना ब्रांड है और कितनी सेल्स की, एक टाइम था जब सभी के पास Oppo Vivo का फोन होता था। लेकिन अगर आप आज ऑनलाइन देखोगे तो Realme एंड Xiaomi, Redmi वगैरह जो भी है, इनका अगर आप लॉन्च इवेंट देखोगे कितना बेटर होता है। मतलब फील आ रही थी, वो वाइब आ रही थी कि मतलब धक्का दे रहे हैं बस। ओप्पो में नया डैश कौन सा है भाई? सॉरी मुझे हिंदी में ये मतलब संख्याएं नहीं पढ़नी आती, इसको एक बार आप मैथ वाली उसमें बता दो तो प्लीज। दो कलर थे ना? हाँ जी, आपको दो कलर देखने को मिल जाएंगे, एक ब्लैक कलर में आएगा, एक ब्लू कलर में आएगा। सेम डिजाइन के साथ एक फोन Vivo पहले लॉन्च कर चुका है जिसका नाम है Y75। ऑलमोस्ट फीचर भी सेम थे, बस प्रोसेसर वगैरह का थोड़ा फर्क आपको देखने को मिल जाएगा उसके अंदर। तो उसी फोन को बस इन्होंने अंदर हार्डवेयर चेंज करके दोबारा एक तरह से आप कह लो लॉन्च किया। और Y75 जो है वो अभी अभी लॉन्च हुआ था, जस्ट कुछ दिन पहले ही। रेडमी के फोन में बैटरी हीटिंग इश्यूज है लाइक Redmi Note 10 सीरीज में? डिपेंड करता है, देखो हीटिंग इश्यूज तो हैं, हाँ हीटिंग इश्यूज का मैं मानता हूँ, लेकिन उसका रीजन यही रहता है कि चार्जिंग देते हैं ऑप्टिमाइज्ड अच्छा नहीं है MIUI, तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा हीट करते हैं। हीट रियलमी के भी फ़ोन करते हैं, ऐसी बात नहीं है, अगर आपने यूज़ किया होगा
कोई कोई फ़ोन बहुत अच्छे से काम करता है जो बिल्कुल हीट नहीं होता। लाइक मैंने अभी Realme GT मास्टर एडिशन यूज़ किया था, उसमें हीटिंग प्रॉब्लम काफ़ी कम देखने को मिली थी, हालाँकि काफ़ी स्लिम फ़ोन था। एंड ये मेरे पास सैमसंग M52 पड़ा है, ये भी काफ़ी स्लिम फ़ोन है एंड इसके अंदर भी हीटिंग इश्यूज़ देखने को मिल जाते हैं। बिकॉज़ जितना स्लिम फ़ोन होगा ना, उतना हीटिंग इश्यूज़ आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे बिकॉज़ कंपोनेंट्स जो हैं वो एकदम से सटा के लगाए जाते हैं एक-दूसरे के साथ। तो उस वजह से हीटिंग इश्यूज़ बढ़ जाते हैं। अंशु भाई वो रेडमी वाली लाइव दिखाओ ना, मोबाइल तो देख लें। अभी दिखा देता हूँ भाई, आप लोग बोलो और मैं कुछ ना करूँ, ऐसा नहीं हो सकता। वेट अ सेकंड ब्रो, अभी दिखा देते हैं आपको। एंड थोड़ा चला भी लेते हैं, वो प्राइसिंग वगैरह नोटिस कर लेंगे कि कितनी हमें देखने को मिल रही है Redmi 11 सीरीज के अंदर। लेट्स सी। शाहिद फिरोज, एट दिस सेगमेंट बेटर प्रोडक्ट। इस सेगमेंट में भाई ये प्रोडक्ट अच्छा है, इस प्राइस रेंज में 15-16 हजार रुपए की प्राइस रेंज में ये फोन बहुत अल्टीमेट है, बहुत अल्टीमेट। मतलब ये चिपसेट आपको इस प्राइस रेंज में मिलने को देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा फोन है। ओप्पो में 25 तक का कौन सा अच्छा है? 25 तक आप Vivo V23, बहुत अच्छा फोन है, Vivo V23 आप ले सकते हो। अनामिका शिव सोनी पूछ रहे हैं कि रैम कितनी है इसमें। रैम आपको 4 GB, 6 GB एंड 8 GB के 3 ऑप्शन देखने को मिल जाती है रैम। तो मेरे हिसाब से जो नॉर्मल यूजर है उनके लिए, गेमिंग वगैरह भी अगर आप करते हो, तो अभी 6 GB रैम वाला जो ऑप्शन है वो सबसे बेटर लगा मुझे, वो काफी बढ़िया मतलब प्रोडक्ट है। तो अभी के मैं चलाता हूँ यहाँ पे भाई अपना रेडमी वाला, ठीक है। वेट करो आप ज़रा बस, ऑलमोस्ट चली गया है। रैम अभी बता चुका हूँ भाई मैं आपको। ऑफलाइन भी देखने को मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि ऑफलाइन नहीं देखने को मिलेगा। Welcome to all our fans to the launch of our most awaited, most loved, the blockbuster Redmi Note series. Looking back to last year, technology has again proven that it can दिस इज द elevate the Redmi lives of Note people, 11 which makes सीरीज। our resolve to bring लेट्स innovation सी for क्या कुछ all मिल रहा है इसके even अंदर। stronger. Our resolve motivates us at Redmi India to कैमराज build अच्छा है भाई, great बाकी तो products with the कैमरा तो best देखो लाइव specs, टेस्ट आउट highest करके ही पता quality लगता at है कि honest कैसा है, ऐसे तो pricing क्या to ही give बता our सकते हैं। users more cutting edge technology and freedom to choose their experiences as per their needs. We always aim to push ourselves to make technology more accessible for our consumers and bring ओके, them products with a high लेट्स गो टू price अ to गुड पॉइंट। performance ratio. Redmi is one of the most loved consumer technology brands around the world. A large part of our success can be attributed to the Redmi Note series, which has become the de facto standard of smartphones in its segment. I'm very proud to announce that the Redmi Note series Redmi Smart Band Pro comes with over 110 plus ओके, रेडमी बैंड भी लॉन्च कर दिया इन्होंने। Hmm, हम चलते हैं सीधा प्राइस पॉइंट वाले सेगमेंट में। टीवी भी लॉन्च किया क्या भाई? मे बी टीवी भी लॉन्च किया है यार इन्होंने। भाई ऑब्वियसली ऑनलाइन मिलती है, लेकिन आपको पता है ना, वो फिर ब्लैक मार्केटिंग चलती है, उसके बाद में फर्स्ट सेल के अंदर ही बाय कर लेते हैं और उसके बाद शॉप्स में आने लग जाता है फोन। तो मिल जाएगा, मैंने खुद पोको X2 जो है वो और बहुत सारे फोन बाय किए हैं मैंने। यस, दिस इज द प्राइस। 17,000 प्राइस है 6 GB के लिए विदाउट ऑफर। एंड 8 GB का जो प्राइस है वो ये रहा। एंड जो 4 GB का प्राइस है वो ये रहा। सो फिल्म फैक्ट्री, थैंक यू सो मच भाई।
ओके, अभी हम देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। Thanks, Sneha. This is a beautiful product packed with loads of लेट्स features. सी भाई, I'm अभी sure our fans are really going to Redmi love Note it. 11 सीरीज। Let's have a quick recap before we get on with the most awaited part of the launch. So, we have truly set the bar with Redmi Note 11s. It comes with 108 ओके, megapixel pro grade camera, 90 90 हर्ट्ज की फुल एच डी प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रही है आपको। एंड इसके बिना जो है वो 5000 mAh की बैटरी, 33 वॉट का फास्ट चार्जर, डुअल स्टीरियो स्पीकर, 3.5 mm का ऑडियो जैक भी देखने को मिल रहा है, मीडियाटेक हीलियो G96 मिल रहा है जो कि एक बूस्टेड वर्जन है ऑफ G95 का। एंड उसके बिना क्वाड कैमरास देखने को मिल जाएंगे, 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड होगा, 2 मेगापिक्सल के दो कैमरास देखने को मिलेंगे। फ्रंट में आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। एंड फोन जो है वो यहाँ पे आपको स्प्लैश प्रूफ देखने को मिल जाता है IP53 की रेटिंग के साथ। अच्छी फीचर्स हैं यार, स्पेक्स। एंड Hz नाउ लेट्स सी द FHD प्राइस। plus AMOLED display, 5000 mAh battery with 33 watt pro fast charging and the powerful MediaTek Helio G96. And better than the perfect R11. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नोट 11। नोट 11 के अंदर जो है वो 6 नैनोमीटर का जो है वो स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। ये भाई प्रोसेसर उतना अच्छा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ खास ज़्यादा मतलब नहीं है। इसके अंदर भी जो है वो आपको 90 हर्ट्ज की फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। स्प्लैश प्रूफ है ये भी फ़ोन। एंड यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। सेम 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होगा, उसके बाद 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल के डेप्थ एंड मैक्रो, 5000 mAh की बैटरी, 33 वॉट का फास्ट चार्जर एंड डुअल स्टीरियो स्पीकर विद हेडफोन जैक। On 10 ओके, Redmi तो Note इसका 11 लेकिन comes with प्रोसेसर मुझे 90 पसंद नहीं Hz आया बिकॉज इसका FHD प्रोसेसर plus उतना AMOLED कैपेबल नहीं है display, भाई। power efficient Qualcomm Snapdragon 680 built on flagship 6nm architecture, 5000 mAh battery with 33 watt pro fast charging and 50 megapixel AI quad camera. सलीम भाई, वीवो में Now, the 25,000 Redmi तक Note तो 11s comes in three variants. The 6GB plus 64GB variant will be available for rupees वही 16,499. 17,000 ऑफर के बाद आपको The 15,500 तक का मिल 6GB जाएगा। plus 128GB नोट variant will 11 be एस ले available सकते हो for आप। rupees 17,499. एस वाला वेरिएंट And अच्छा the है लेकिन 8GB plus 11 128GB अच्छा variant नहीं will है। be available for rupees 18,499. Now, the Redmi Note 11, the 4GB plus 64GB variant will be available at an introductory launch price of rupees 13,499. The 25,000 6GB में plus Mi 11 आई काफी अच्छा 64GB है। variant will be available at an introductory launch price of rupees 14,499. Vivo And T1 the का 6GB प्राइस जो है plus वो 17,000 है 128GB variant will अनलिमिटेड। be available for rupees वीवो के 15,999. बारे में बताओ, क्या मेरा कैसा रहने वाला है। वीवो अच्छा है भाई, बढ़िया फोन है, अच्छा Now है moving फोन, on ले to the सकते हो आप। sleek and stylish Redmi Smart Band Pro Sports Watch, always on fitness, with the big AMOLED color display, 110 plus pro workout modes, SpO2 monitoring, right Q health algorithm. The Redmi Smart Band Pro will be available. ओके गाइस, सो ये तो था हमारा लॉन्च इवेंट Vivo T1 5G का। आई होप मज़ा आया होगा, मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया आप लोगों के साथ। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आज वैसे एक वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ, उम्मीद रहेगी कि आज ही पोस्ट कर दूँ इन्फिनिक्स 05G के बारे में। पूरी अच्छी से स्पेक्स जो है वो उसकी रहने वाली हैं, तो आप कंपैरिजन कर सकते हो दोनों फ़ोन्स के बीच में कि आपको Vivo T1 लेना चाहिए या फिर इन्फिनिक्स 05G लेना चाहिए, बिकॉज वो भी बहुत बढ़िया आने वाला है। Vivo T1 ज़्यादा अच्छा है, Redmi Note 11S से T1 अच्छा, एस 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 अभी जो है वो उसका एंतुतु स्कोर वगैरह देखने पड़ेगा एंड दोनों ही फोन्स का स्कोर देखना पड़ेगा बिकॉज उसको भी ओवरक्लॉक किया है इन्होंने। Helio G96 देखने को मिलता है आपको Redmi 11S के अंदर भी, तो मेरे हिसाब से T1 ज़्यादा बेटर रहने वाला है बिकॉज अच्छी खासी फीचर्स देखने को मिल जाती हैं इसके अंदर आपको, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी Redmi Note 11 है भी अच्छा है, उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों फ़ोन
बढ़िया है, ये फ़ोन भी भाई एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं अब। बाकी गाइस ओके, एंड करते हैं स्ट्रीम को अभी यहीं पे। बाकी बता रहा था मैं शाम को जो है वो इन्फिनिक्स ज़ीरो 5G के बारे में वीडियो आने वाली है, तो कंपैरिजन देख लेना एंड डिसाइड कर लेना कि किसकी फीचर्स ज़्यादा बढ़िया हैं, बिकॉज अभी तो फीचर्स ही सामने आई हैं, ओवरऑल एक्सपीरियंस तो नहीं बता सकते हम किस फ़ोन का बढ़िया है। बट फीचर वाइज आप कंपैरिजन कर सकते हो कि आपको इन्फिनिक्स ज़ीरो 5G लेना है या फिर Vivo T1 लेना है। काफ़ी अच्छा मतलब हो सकता है कंपैरिजन दोनों के बीच में। सो ओके गाइस, bye bye, I'm signing off. Catch you guys in the next one. Till then, take care. Bye bye. Jai Hind.